Good evening, students. Today I will teach you first chapter of economics, class 11th, Introduction to Economics and Statistics. I will tell you the meaning of economics first. Economics is a science of human behavior which concern with allocation of resources in such a manner that consumer will get maximum satisfaction, producer will get maximum profit, and society will get more and more social welfare. आई विल एक्सप्लेन यू इट. देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केर्स रिसोर्सेज. इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, बहुत ही कम हैं, और उनके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं. तो प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कैसे यूज़ करें कि कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी को क्या मिले, मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर. इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सम टर्म्स आर देयर. आई विल टेल यू अबाउट दीज टर्म्स. Consumer is a person who consumes goods and services. For example, I have purchased a packet of chips from the market and eat it. That is called, I will call the consumer. Second, seller, who will sell, to whom I have taken that packet. That is called a seller. He will work to earn a profit. Producer, who will produce that chips. That is called a producer. Service holder and service provider, these are two different terms. A one who is in job and working for some other person is getting paid for it. That person is known as service holder or service provider, who provides some kind of services to other, like doctor, lawyer, etc. And capital goods, these are used in production of other goods like machineries, etc. Now I will discuss about the types of activities. Any individual, जो कोई भी individual हो, in ordinary life he will do so many types of activities. The type of activities are two type: economic activities or non-economic activities. Firstly, I will tell you about the goods. Economic goods, those goods you have to purchase, or non-economic goods, those you didn't purchase from the market, then you will get freely, like sunshine, like sunshine, like rainfall, etc. But economic goods are those goods that you purchase from the market. Now I will tell you the economic activities, that is production, consumption, and distribution. That is production. Production is a mechanism. It means it is a process in which we convert raw material into finished goods. For example, we will make a cloth from the cotton. Consumption, you will purchase something from the market or you will consume. And distribution, in distribution, we have four factors: land, labor, capital, entrepreneurship. Land will get a rent. Labor will get a wages. If you are getting capital from the market, you have to pay interest for it. And you will appoint some person in your factory or in your company. You have to pay the part of profit in the form of salaries, that is known as profit. Or these are non-economic activities that you will get free of cost, like caring for loved someone, indulging in one's hobby. These are the example of non-economic activities. Now I will discuss about the economic problem. अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिसोर्सेज आर स्कार्स. इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और जो इंसान की इच्छाएं हैं, ह्यूमन वांट्स है, दैट आर अनलिमिटेड, दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड. आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं. जितनी हमारे पास मनी होती है उतने एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे बढ़ते जाते हैं. रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, गर्मियों में आप देखिए, द सप्लाई ऑफ मिल्क विल बी शॉर्ट बट यूजेस आर मोर. That milk can use for ice creams, that same milk can use for curd, that same you can use for shakes, etc. Now the next concept is meaning of statistics. Statistics refers to a data and the method of collecting data. So it is basically into distinct senses, plural sense and singular sense.
In statistics, we always study the plural sense. Plural sense, it refers to the numerical set of data collected in a systematically manner with a definite purpose as in the field of study. देखिए बेटा, in plural sense statistics I will tell you कि quantitative data, that means it will be in numbers. It will be in numbers. Most probably statistics we have taken always in plural sense. Data means the facts and collection of figures, that is called a data. Data is classified into two data is classified in two ways. One is quantitative data and one is qualitative data. Quantitative data that can be expressed in the numerical term like prices, income, weight, and qualitative data that will be expressed in the not in numerical term, it is expressed in the qualitative data like IQ of the students, etc. Now I am telling you statistics in singular sense. It refers to the science of collection, presentation, analyzation, presentation of numerical data. What is this? I am telling you about. देखिए बेटा, if I have to make the data in plural sense, firstly I have to singular data. Then I will make the data comparable by the plural sense. For example, I am taking data of one student. He is studying in my class. So that is called a statistics in singular sense. If I am taking data of 5 or 6 students to compare that, that means that is statistics in plural sense. Collection means to collect the data related to problem. Organization means manage it. Presentation means present it with the help of diagrams and graphs and others. And analyzation means average, dispersion, and correlation. These are the chapters that you will do in numerical in next. Interpretation of data. Interpretation means to find the conclusion from them. What are the main functions of statistics? Statistics के main function क्या है? देखिए बेटा, हम statistics कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ इसके मेन फंक्शन है. इट एक्सप्रेस फैक्ट रिलेटिंग टू डिफरेंट फिनोमेना इन नंबर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज कलेक्टेड इन नंबर्स. दिस इज help us to policy formulation to compare the data relating to facts. It enlarge in an individual knowledge, experience, and power of reasoning. I already told you about जो statistics है, that is collect in the aggregate of facts. A single individual data is doesn't known as statistics. Scope of statistics and planning. देखिए बेटा, if you want to do some planning, that statistics is used. For example, a government is making any plan related to the poverty. Firstly, what the government will do, the government will check the percent of poverty in the economy, the number of poor peoples in the economy. Statistics in business and management. In business and management, this is also used. Decision related to marketing, production, finance, investment, control are made on the basis of these data. Statistics in industry. In industry, we also need statistics in quality control. There are statistical tools. The statistical tools which I already told you previous, these are collection of data and collection of data and presentation of data and organization of data. These are. Now, importance of statistics. Firstly, I will tell you about the importance. Importance means इसका महत्व क्या है, ये कहाँ काम आती है. अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो फर्स्टली यू हैव टू नो द स्टैटिस्टिक्स अबाउट. आपको उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता हो कि कितने परसेंट पॉवर्टी है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको कैसे करना है और क्या करना है. वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. वर्किंग आउट की कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताता है. कॉज मीन्स क्या कारण रहा, इफेक्ट मीन्स क्या प्रभाव पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. देखिए बेटा, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, इनकम में से जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे उसके बाद ही आपकी क्या बचेगी, सेविंग. नेक्स्ट इज इनकम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग.
ये डाटा जो है, स्टैटिस्टिकल डाटा जो है, फोरकास्ट मीन्स टू सी द फ्यूचर को देखने के काम आता है. इट मीन्स फ्यूचर की पॉलिसीज बनाने के काम आता है, फ्यूचर में काम आता है. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने के काम आता है. डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट मेक, लाइक गवर्नमेंट इज ड्यूरिंग दिस टाइम गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसी related to the petrol and diesel. Limitation of statistics. Statistics is limited to the study of numerical facts, only ignores qualitative aspects. दिस इज़ द मेन थिंग कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टडी करती है सिर्फ और सिर्फ किसको, क्वांटिटेटिव डाटा को. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ये क्या करती है, इग्नोर करती है. इट इज़ स्टडी द एग्रीगेट ओनली. ये सिर्फ किसको स्टडी करती है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट को स्टडी करती है. क्वालिटेटिव को ये स्टडी नहीं करती है और इंडिविजुअल को भी ये स्टडी जो है वो नहीं करती है. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू ज़रूर होते हैं बट सिर्फ और सिर्फ एवरेज बेसिस पर. और जब भी हम स्टैटिस्टिकल को स्टडी करेंगे, व्हेन वी विल स्टैटिस्टिकल स्टडी, वी विल study only and only homogeneous data. Thank you, students.